दिस क्वेश्चन अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू एनवायरमेंट और बहुत सारे लोगों ने इसको एनवायरमेंट का क्वेश्चन समझ के उसका आंसर लिखा भी है. बट व्हाई यूपीएससी विल आस्क अ क्वेश्चन appearing to be environment related and that also in paper 1 GS paper 1 2025 मेंस में जो क्वेश्चन आया. व्हाई विल यूपीएससी आस्क? अब इतना कोई मजाक तो करेगा नहीं यूपीएससी, या कोई बच्चों का खेल तो है नहीं. What I am trying to highlight is that even though the question appears to be very simple and straightforward, it is not only that you should write contextually relevant answer. ये तो लिखना ही है. Contextually relevant answer is important, but your answer should also justify the paper. जो relevant paper है उसको भी justify करना है. कैसे? How it is going to happen we will understand in a while. The question is achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with the poor people's needs in a country like India. सबसे पहली बात, सस्टेनेबल ग्रोथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, इफ in India we are focusing to achieve sustainable growth with emphasis on environmental protection, this mode of policy implementation will come into conflict with poor people's needs. जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनकी जरूरतों के कॉन्फ्लिक्ट में आएगा. दैट मीन्स सस्टेनेबल ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, सो दिस विल लीड पुअर पीपल्स नीड्स harmful, how it will cost some way of, it will have some negative impact on poor people needs. Means sustainable growth एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को पुअर पीपल नीड्स के कॉन्फ्लिक्ट में, मीन्स अगेंस्ट में स्टेटमेंट है, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. सो क्वेश्चन इज लाइक इट इज गिविंग यू ए स्टेटमेंट. ये तो एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, दिस इज ए सिंपल सा स्टेटमेंट, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट. So very basic two mistakes that I would like to highlight over here that most of the UPSC aspirants have committed or they may commit in future as well. The first mistake is that the meaning of comment. अगर UPSC ने पूछा है comment, तो you should comment on that statement. It is giving you a straightforward statement. It is not asking you to explain, not asking you to examine. It is asking you to comment on this statement. Means जो भी ये जो आर्गुमेंट होगा इसका, सस्टेनेबल ग्रोथ वर्सेस पुअर पीपल्स नीड्स, इसके दो आर्गुमेंट होंगे. यस इट विल कॉन्फ्लिक्ट, नो इट वोंट कॉन्फ्लिक्ट. कमेंट मीन्स यू नीड टू गिव बोथ द पॉइंट्स एंड देन यू गिव अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट. दैट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट. अगर यहां पे होता एग्जामिन, सपोज यहां पे इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करने अगर यूपीएससी कह देता, एग्जामिन वुड हैव मेंट वेरी डिफरेंटली. एग्जामिन का मतलब होता कि आपको ये जो है ना कि यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यू नीड टू गिव माइन्यूट लेवल पे पॉइंट्स, यू नीड टू गिव फैक्ट्स, यू नीड टू गिव सम आर्गुमेंट्स एट माइन्यूट लेवल दैट सपोर्ट और दैट गो अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. अगर यहां पे होता कि टेक योर स्टैंड एंड जस्टिफाई योर स्टैंड, देन आपको आर्गुमेंट देने होते और आर्गुमेंट देने के बाद आपको एक स्टैंड लेना होता यस या नो का. बट द क्वेश्चन हियर इज कमेंट. कमेंट मींस आपको आर्गुमेंट्स देने हैं इसके फेवर में कि यस देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, नो देयर विल नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट, और इन दोनों को बैलेंस करता हुआ आपको एक व्यू पॉइंट बनाना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट. So most of the cases में क्या हुआ है, aspirants could not comment, they went on either explaining it or they went on merely giving arguments over it. That was the first mistake. Second mistake, as I highlighted over here, that it should justify the relevant paper. Your answer should justify the relevant paper. अब ये environment related question आपको दिख रहा होगा, it seems to be related to environment, but here it is also related to poor people. अब अगर question paper 1 में आया है, तो certainly you should connect it with
सोसाइटी। सोसाइटी में पॉवर्टी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे कनेक्ट करना है इसको। नो डाउट आंसर का जो थीम होगा ओवरऑल जो आप लिखेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट आप एनवायरमेंट से रिलेटेड लिखेंगे, बट द एम्फोसिस शुड बी ऑन पुअर पीपल, एम्फोसिस शुड बी ऑन पॉवर्टी एंड पुअर पीपल नीड्स इन इंडिया। सो इट इज नॉट कि आप एनवायरमेंट के सारे पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस लिखते चले जाओ। इफ यू आर राइटिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट इंडिया एंड if your answer is not at all mentioning poor people in your text of your answer, then certainly you are not going to get decent marks, क्योंकि उस केस में आपका आंसर थोड़ा skewed हो जाएगा। That means that your answer should have ample amount of reference to the poor people needs in India. उस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे then that answer will justify this paper 1 and that also will be contextually relevant. Now अब लिखना क्या है इसमें? सबसे पहली बात तो you will write an introduction. Intro should briefly act as a preamble of your answer. So what could an introduction to this answer will look like? Introduction में आप बता सकते हैं that the goal of sustainable growth and environmental protection often intersects with the needs of poor people. This is because poor people are often dependent on natural resources for their livelihood. ठीक है, क्या मतलब है यहाँ के भाई? आप लाइवलीहुड के लिए पूरे पीपल जो है, जैसे फायरवुड के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन, लकड़ियों के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, फायरवुड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट? दे आर ऑल्सो इनहेबिटिंग इन कंजर्व्ड रिजर्व एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज में वो रह रहे हैं लिविंग. So these are like they are dependent on natural resources. Their livelihood is related to mining. So since the poor people have very weak livelihood options, very meager livelihood options, and those options are dependent on natural resources, and if the policies are trying to promote sustainable growth through environmental protection, then certainly their livelihood, the poor people's livelihood, will come at stake. So this we introduce in the introduction. Now comes the body part. The body part ideally should have 3 sections. First sections you will give an argument in favor. आपको बताना होगा कि yes, if you are promoting sustainable growth through environmental protection, that it certainly comes under conflict. कैसे? आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट imposes mining bans, तो माइनिंग बैन्स होने से उनका लाइवलीहुड और सर्वाइवल इंपैक्ट करेगा. If government fixes certain limits related to forest areas or conservation related जो एरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल दिस नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिलेटेड जो एरियाज हैं, इफ गवर्नमेंट इज लाइक फिक्सिंग देयर बाउंड्रीज, तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का इशू आएगा. इफ पुअर पीपल आर लिविंग देयर, तो वहां पे उनके लिए क्या है, दे नीड टू बी डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेसमेंट होगा. तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं. इफ गवर्नमेंट पॉलिसीज आर फोकस्ड ऑन इंश्योरिंग रिन्यूएबल एनर्जी को अगर प्रमोट करते हैं, तो कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगी पुअर पीपल की, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट दैट चीप. जो आदमी आराम से अगर कोयला निकाल करके, अगर इफ दे आर कुकिंग देयर फूड और यूटिलाइजिंग कोल पावर, सो अगर उन पे कह दें कि आप सोलर प्लांट लगा लो, तो दैट विल कॉस्ट देम हेवीली. तो यस, सस्टेनेबिलिटी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो दैट विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट. देन यू शुड से कि नो, इट इज नॉट लाइक दैट. देन यू शुड गिव आर्गुमेंट्स अगेंस्ट. क्या हो सकते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट? यू शुड टेल दैट नो, इट इज नॉट द केस. Sometimes if the government seeks to promote natural resources, then it can create the decent policy implementation can lead to increased livelihood options. For example, अगर mining areas का regulation अच्छे से हो
एंड इफ दिस माइनिंग एरिया रेगुलेशन गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू लोकल्स, तब तो इशू रिजॉल्व हो गया। अभी क्या है, माइनिंग एरियाज में बाहर लोग जाकर के सारा माइन उठा, सारा रिसोर्सेज मिनरल्स उठा करके दे आर गेटिंग रिच। तो इफ लोकल्स आर गेटिंग एम्पावर्ड तो बहुत अच्छी बात है। इफ लोकल कम्युनिटी लेड, एक बहुत अच्छा टर्म यहाँ पे आप कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट बता सकते हैं, कम्युनिटी लेड पॉलिसी फॉर्मेशन ही बता सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग। इफ द कम्युनिटी इज इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, तो आप बता सकते हैं कि दैट विल नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट, दैट विल एक्चुअली एम्पावर द पुअर। तो इस तरीके से दो दो तीन तीन पॉइंट यू नीड टू गिव, आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा करने के बाद यू नीड टू गिव अ बैलेंस्ड पॉइंट दैट इट इज नॉट ओनली it is not that only the sustainable growth with emphasis on environment protection is only responsible for this conflict. Very often, skewed policy making, disregard for locals' concerns, and devoid of understanding of poor people, poor and affected people, is something that harms the most. इस तरीके से आप बता सकते हैं कि स्क्यूड पॉलिसी मेकिंग, लोकल कंसर्न्स का कंप्लीट डिसरिगार्ड, लोकल ग्राउंड लेवल की रियलिटी को लेकर के अवेयर नहीं है, इन चीज़ों, ये चीज़ें ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। सो इट इज़ नॉट दैट ऑलवेज अ सस्टेनेबल ग्रोथ इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। इतना करने के बाद यू शुड हैव रिटन अ कंक्लूजन। इन द कंक्लूजन यू गिव अ स्मॉल वे फॉरवर्ड। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पे आप कंक्लूजन को वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड को आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपने यहाँ पे चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर दिए, ये तो एक तरीके का चैलेंज हो गया। जो आपने चैलेंज आइडेंटिफाई कर दिया, इसी को आप वे फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए दैट to promote sustainable growth, it is also important that poor people's needs are also given proper, are addressed properly. For this, involvement of the community led policy making, फिर से आ गया, community led policy making, decision making, community led growth is very important to ensure that sustainable growth and environmental protection does not conflict with poor people's needs. ऐसा करने से क्या है, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था कि yes they often intersect with poor people needs, उस चीज को हमने यहां बताया कि they might not conflict, they might not intersect, अगर हमने अच्छे से कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट और लोकल नीड्स को अगर अच्छे से एड्रेस किया तो। So this was the overall, this could have been the overall approach to write an answer. तो we identified कि comment का मतलब क्या है and how an environment related question should be addressed from the GS paper 1 perspective. पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से लिखना है, emphasis should be on poor people needs, not on environmental protection. So this was the ideal way to write, to approach this answer.